इतने स्पॉन्जी है ये। रानिया से तालियां बजाती है और खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है। हो गया, इतना लाइव खराब हो गया। Okay, you guys came here too. Okay. Oh, what you want me to do? Another challenge? Oh God, it will be tough. So, what kind of challenge you want me to do this time? Yeah, I know you guys love challenges and you basically want me to suffer. No, I'm up for your entertainment, but okay, let me think. 2 hours later. Okay, we shall be doing very interesting and it will be so much fun. I assure you, I will be eating sweet food for legit 24 hours. Yes, I can't believe I'm saying this. No, God, please, no. No, but it's just for your fun aspect, and those who know me, they know actually that I don't consume any kind of sweets because I don't like, and as of today's generation we don't actually consume the sweets, which is not also a good thing. Yeah, it contains calories, but it also contains flavonoids which acts as antioxidants, and because of that which reduces our aging and it keeps our heart very safe, and it reduces the amount of injury which could happen, and it also enhances your brain functioning. So sweet is a must. And as I don't consume any kind of sweet, so I guess my sweet level is gradually decreasing, which I need to increase a bit. So that's why I'm up for the challenge and for the fun of yours. Yes, so I'll be eating sweet food for legit 24 hours. Yeah, I don't know why I'm dancing, but we are going to do this. Also, I had this secret wish that हमने फिल्म्स में देखा, रानिया से तालियां बजाती है और खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है. Can I do this? Please don't judge me. See, we have this mangoes, juicy mangoes, and some tang shake. Yes, this is for my breakfast. It's 9 a.m. in the morning and we are having this fresh, delicious breakfast. Yeah. Hello people, so I'm back. I took a shower and as you can see, I'm looking so fresh. Yes, so this is my details. This is my OOTD at home. So अभी बज गए हैं 12:30 और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है. So जैसे कि हम तो आज मीठा खा रहे हैं. Hi भैया. So we'll be making very yummy pancakes. Yes, और मीठा तो मुझे पसंद नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, बट आई लव पैनकेक्स और मुझे वो बनाना भी बहुत पसंद है और हम आज साथ में मिलके पैनकेक्स बनाएंगे. Eggs will be taking some bananas, yeah, and some eggs. We'll be taking 2 eggs. और लेंगे हम थोड़ा सा vanilla essence. So guys, you can see pancake बनाने के लिए जो भी ingredients जरूरी है, we have all of that, starting from the bananas to sugar, honey, vanilla essence, 2 eggs, baking powder, where is the baking soda, butter, cherries, and some maida, which is the key ingredient. Ice cream. ice cream, Chocolate. chocolate, Candy. candy, Now you can see our batter is ready. pudding, Cake. cake, As you can see, our pancakes are ready. Ta-da! Sorry, चलो गिर गया. मैं आपको दिखा दूँगी. I love sweet कितने स्पॉन्जी है ये. ice cream. और इसमें मैंने हनी डाला है और उसके ऊपर से बटर, जो कि अभी रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो गया है. सो एंड ऑल्सो वी हैव 1 पेपर बोट विच इज इन द चिली गुआवा फ्लेवर. सो आई विल बी ईटिंग दिस नाउ. यस, चलो. What's your favorite sweet? What's your favorite sweet?
Wow, They are great. I like them. Yes. My mom would be so happy. मेरी मम्मी बहुत खुश होगी क्योंकि हम कहीं भी क्या गाइज आप लोगों के साथ भी ऐसा अगर होता है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. क्या होता है हम जब कहीं फैमिली फंक्शन या रिसेप्शन में या शादी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है जो स्वीट का जो प्लेटर होता है वो मैं नहीं लेती. ज्यादातर मैं रिफ्यूज कर देती हूँ और वो सबके साथ सामने मुझे एम्बेरसमेंट भी फील होती है, बट आई नो शी इज टेलिंग फॉर माय ओन गुड. बट वो बोलती रहती है कि थोड़ा तो मीठा खा लो, आजकल के बच्चे पता नहीं डाइटिंग करते, बट आई एम नॉट ऑन डाइट. आई वांट टू क्लियर दैट. आई एम नॉट ऑन डाइट सो आई एम गेनिंग वेट दिस डेज. और मेरा क्या होता है ज्यादा जंक फूड खा लेती तो शायद वेट गेन हो गया था, लेकिन पहले तो ऐसा था कि ये तो मोटी ही नहीं होती, ये तो इतनी पतली है. सो दैट आर सोशल इश्यूज बाय नाउ, बट आई हैव गेन्ड वेट एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मैं मीठा नहीं खाती कि मैं मोटी हो जाऊंगी. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. तो अभी भी बहुत खुश है क्योंकि वो मुझे देख रही है कि मैं मिठाई खा रही हूँ. मिठाई मुझे वो बोलती रहती है कि लोगों का डायबिटीज हो जाता है, तेरा तो मतलब नहीं खा के कुछ हो जाएगा. ये पेपर बोट पी लेती हूँ. बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों. इट्स वेरी हॉट, सो यू नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. यहाँ पे 5 पैनकेक्स थे. मुझे लग रहा था कि मैं खा लूंगी, बट नो, आई कांट ईट ऑल 5 ऑफ देम. बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है जब मुझे ऐसी सजाएं मिलती है. एंजॉय मी डूइंग दिस ना. इसलिए बार बार बोलते रहते हो चैलेंज करो. ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं और जिंदगी में पैनकेक ना खाऊं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर. पता नहीं इसका फ्लेवर भी ऐसा क्यों लग रहा है. बहुत ज्यादा कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है. आई एम मिसिंग माई रेगुलर दाल चावल. अभी मुझे सिर्फ दाल चावल दे दो, आई बी ओके. नहीं खा पा रही हूँ दोस्तों. गाइस अभी इतना तो बच गया है, बट प्लीज पार्डन मी, मैं और नहीं खा सकती. समझ में आ गया, बहुत ही टफ चैलेंज है. But please stay tuned. Something interesting is popping up. कुछ अच्छा मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ आज. तो प्लीज बी विथ मी एंड देखते हैं आगे होता है क्या. Hey guys, so it's 3 in the evening. It's like 3:30 now, but I am dressed in this cool attire for some virtual shoots. Yeah, I'm collaborating with a very good photographer. The shoot has not been ended. We are trying the different applications because of the network issues, and he will be in our video soon. So here we have. There is Parth. Parth, what do you want to say? You are in my YouTube channel. Yeah. Hello everyone. What My is? name Parth Yeah. Yeah, I am a wedding and lifestyle photographer. That's cool. Guys, you can check out his page. I will link his Instagram page in my description box so that you can check him out. Yeah. I will just. Yeah. And how's the thing going on with this all virtual trend and things? भी कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन कर लेते हैं थोड़ा हल्का सा. हाँ, yes, okay. That was very great and we took some cool shots जो कि हम आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे. So how was working with me, Parth? Yeah, very fine, very nice. I feel the same actually. So he's very kind and he's very down to earth. So please check him out. Stay tuned to my Instagram handle. I'll link in my description box as usual. Go check it out and you will get some cool shots to see. Okay, bye bye. Hello, it's like I'm done with my shoot and now I want to crave for something. थोड़ा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है. मैं जस्ट लैपटॉप लेके बैठी थी कुछ देखने के लिए, टू हैव माई चिल टाइम. और आई एम बेयर फेस्ड नाउ क्योंकि बहुत हो गया तामझाम और इतना नहीं किया जा सकता, बहुत गर्मी भी हो रही है. तो अभी मैंने सोचा कि मैं कुछ खाती हूँ और इसलिए मैंने ब्लॉग ऑन कर लिया. वी हैव दिस फूड एंड वी हैव दिस अमूल आइसक्रीम. Yes.
आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस. बाकी किसी चीज़ में मुझे आज पूरे दिन में इतना वाव नहीं लगा, लेकिन उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. आई बी टेक In the Footsteps of Glaciers by National Geographic. You can watch it too. So I'll be watching this and am I stream. I like hot dogs. I like fast food. वैसे 7 भी बज चुके हैं और मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी है. So क्या खाऊं इसका? I have also mentioned in my previous video I am lefty, so I am using this left hand. Many people get awkward while using this hand. I don't mind eating pastries as such. कभी कभी जो सडन क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खाना है तो I go for pastry. So I ate my pastry. Now I will meet you all directly at my dinner. So update, अभी 10 बज चुके हैं and it's a dinner time. So वैसे तो कुछ खास भूख नहीं है मुझे, क्योंकि ये मीठा मीठा आई डोंट वांट टू ईट इट ऑल अगेन. but we have no other option left. So मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ तड़कता भड़कता सा बनाऊं कि जिससे कुछ थोड़ा अलग सा टेस्ट या कुछ खाने का मन करे. So आज हम बनाने जा रहे हैं डिनर के लिए बेसन का हलवा. The footage of me making halwa in real struggles of taking Atrange challenges. It's ready, ta-da! It looks delicious, isn't it? Wait, I'll show you it. I put some melted dark chocolate on the top of it, and this is how it looks. I'm done. My tummy is so full. I have put on so much extra calories for today, I guess. It was a very fruitful day. We did it shoots, also we did the challenge. We gained some sweet intake, not some. It's huge in amount, but it's good for our health too. So let's wrap up for today. Yes, so we'll be meeting tomorrow in the morning. Ta-da! Good night, guys. Ta-da! Hello guys, good morning. So it's the morning time and I'm ready for breakfast. We took the challenge for legit 24 hours and it's 9 a.m. already. I started yesterday from 9 a.m. and today it's 9 a.m. So soon. So for our breakfast, I have some fun things here. We have this waffles. Yes, you can see this waffle, and we have some dark chocolate by Amul. Yes, I only consume this dark chocolate because I love this. Let's start our breakfast. I ate some pieces from here and I will eat the remaining. I can't eat all of that. I will keep this amount. I'll be having this. You also should definitely eat dark chocolates. You should opt for this one because these are very crucial for our heart. Even doctors prescribe this. Ta-da! I'm done with my breakfast. So this challenge ends here. Hope you guys had a lot of fun. And on a special note, everyone should consume sweets at least a bit. There should be some sweet intake. So I have ate so much of sweets that I don't want to see any kind of sweet in front of me, or neither I am going to eat. But I don't know, cravings happen, I guess. So how was this challenge, guys? I had a lot of fun and I am sure you guys had a lot of fun seeing me doing such challenges. So please like this video, hit thumbs up, share, subscribe to my channel, drop your comments in the comment section down. Okay, I will be coming with some fun challenges very soon. Till then, take care. Bye bye.